children, I hope you all are good, enjoying the videos and completing your work. So children, watch the video and complete your work in the book. I hope children you are enjoying this chapter as it is very interesting chapter. Here we are learning how to draw and color in paint program or in a computer. So if you want to draw and color in a computer, children, you will use MS Paint. It is a program which is designed for drawing and coloring. So till now children, we have learned how to open MS Paint. We have learned how to use toolbox and color box. We have also learned how to choose pencil tool, eraser tool and brush tool. So in the previous video children, we had learned how to use pencil tool, eraser tool and brush tool. So these are the different tools which are used for drawing and coloring. Children, pencil tool, as we know, even if we draw in a piece of paper, we use pencil. अगर हम पेपर पे भी ड्रॉ करते हैं, अपनी ड्राइंग शीट में भी ड्रॉ करते हैं, तो हम पेंसिल का यूज़ करते हैं ड्राइंग करने के लिए. तो here in MS Paint also we use pencil for drawing. We use, and if we make any mistake, we use eraser, same as we use while drawing on paper. And then children, we can use brush also for drawing the picture or a figure or any kind of sketch, do any kind of sketch. तो यहाँ पे अगर हमें कुछ भी करना है तो हम ब्रश को भी चूज़ कर सकते हैं. And the process of choosing these tools are common, because for choosing or selecting these tools, firstly we go to home tab, क्योंकि all these are present in home tab. So let us see what we did in the previous video. Here is our tools. So children, let us revise what we did in the previous video. In the previous video, we had selected pencil. For selecting pencil, we will go to home. From home, we will click on pencil tool. हम pencil tool पे click करेंगे. Pencil tool पे click करने के बाद हम select करेंगे उसका width. We will select the width from here. हम यहाँ से width को select करेंगे. हम size पे जाएंगे. यहाँ पे size लिखा है. It is written size here. We will go to size. When we click on down arrow key, we will get another box where we have different line of different width. We have lines of different width, and these are the line which we are going to select as per the need or as per our choice. जो भी हमारी ज़रूरत है उसके हिसाब से हम यहाँ से पे लाइन और विड्थ को चूज़ करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे जो भी ड्रॉ करेंगे उस विड्थ का वो ड्रॉ होगा. पेंसिल की विड्थ और थिकनेस विल बी the line which we have, will be according to the line which we have selected. Now we will come to the drawing area and draw a figure. यहाँ पे हमने माउस को ड्रैग करके एक फिगर बनाया. So this is how we can select pencil as well as eraser. Instead of choosing pencil, if you want to choose a eraser, you will click on eraser, and you can rub a part of drawing which you feel is not looking good, या फिर कोई भी problem है हम उसमें change करना चाहते हैं तो we can select eraser also. So we will go to home tab. We will click on eraser tool. Here is just below the pencil tool we have eraser tool. We will click on eraser tool, and then we will select a size. Eraser tool, select size from here, and then we will rub the part of a drawing which is displayed on the screen. Similarly, in case of brush also, we will, last step will be drag करेंगे screen के ऊपर, फिर हम उसको rub करेंगे. Similarly, in case of brush also, we can do the same thing. Here there is a big brush shown here. Here are the number of brushes. यहाँ पे हमें अलग अलग types के brushes है. We can choose any of the brush from here, and then we can choose the thickness of the brush, and we can draw with brush also. So these are the three tools about which we had learned in our previous video. Now children, we are going to learn about our next tool, that is line tool. So children, if you want to draw a line, using line tool you can draw straight and slant line. या तो आप सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हो या टेढ़ी लाइन ड्रॉ. स्लैंट का मतलब होता है टेढ़ा, ठीक है, तो इसे तो हम सीधा लाइन कहेंगे और इसे हम स्लैंट लाइन कहेंगे. तो अगर आपको किसी भी तरह की लाइन ड्रॉ करनी है तो फॉर दैट ऑल्सो यू विल गो टू home tab. You will click on home tab, then you will click on line tool.
the tools line tool is present along with the other tools which are given here. तो सबसे पहले ऊपर आपको लाइन टूल दिया हुआ, आप उस पर क्लिक करोगे और इस लाइन टूल को यूज़ करके यू कैन ड्रॉ अ लाइन. बिफोर दैट यू विल वंस अगेन यू विल सेलेक्ट द साइज़. आप साइज़ को सेलेक्ट करोगे और यहाँ से आप उसकी थिकनेस सेलेक्ट करोगे. सो आफ्टर सेलेक्टिंग द थिकनेस यू कैन कम टू द ड्राइंग एरिया. वंस अगेन यू विल कम टू द ड्राइंग एरिया. आप इस ड्राइंग एरिया में आओगे और यहाँ पे यू विल ड्रॉ अ लाइन. ठीक है. सो यहाँ पे माउस को ड्रैग करके ड्रॉ अ लाइन. सो बाई ड्रैगिंग द माउस वी कैन ड्रॉ एनी टाइप ऑफ लाइन विद द स्ट्रेट लाइन. यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेट लाइन है. दिस वन इज द स्ट्रेट लाइन एंड दिस वन इज द स्लैंट लाइन. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज line tool and draw different types of lines. So children, all the steps are common. In every step we are going to home tab. हम home tab पे जा रहे हैं. After going to home tab we are selecting the particular tool which we want. Like pencil चाहिए तो pencil पे हम क्लिक करेंगे. सब कुछ ऊपर दिया हुआ है. टूल बॉक्स में सारे टूल्स दिए हुए हैं. इरेजर चाहिए तो we will click on eraser. अगर हमें ब्रश चाहिए तो we will click on brush. And if you want to draw a line you will click on line. So here you have learnt how to draw a line. Now next is how to draw a rectangle. So in every case children the steps are same. First, and in the first step we will click on home tab. There are two tabs given in menu bar, and this first one is home tab and the second one is view. Home tab पे we will click on home tab. You can see here this is home tab. Then we have rectangle tool here. यहाँ पे हमारे पास rectangle tool है. यहाँ पे हमारे पास rectangle tool है. So we will click on rectangle tool. After clicking on rectangle tool, what will we do children? We will click on size. ये size वाला box है, इस पे हम click करेंगे. Then we will have different lines of different size. We have lines of different size. So as per our need, we will select a particular width here of the line and you will come to the drawing area. आप drawing area में आओगे, you will come to the drawing area. Here is drawing area, this is drawing. ये पूरी area drawing area कहलाती है. अब यहाँ पे आप माउस को ड्रैग करेंगे. एज यू नो चिल्ड्रन, इन पेंट प्रोग्राम वी यूज़ माउस फॉर ड्राइंग. हम माउस को यूज़ करके ड्रॉ करते हैं. हम पेंट प्रोग्राम में हम माउस को यूज़ करके ड्रॉ करते हैं. तो यहाँ पे हम जो भी ड्राइंग करते हैं हम माउस को ड्रैग करके करते हैं. तो यहाँ पे हम जब ने सेलेक्ट करके साइज और माउस को हम ड्रैग करेंगे तो वी विल गेट अ शेप called rectangle. So this is how you will draw a rectangle. So we will be practicing this in the online class. हम अपने online class में ये सारी चीज़ें बना करके देखेंगे. ठीक है. That will be easier for you to understand. Then now children, our next shape is, हमारा जो next shape है वो है oval. Oval is the shape where you can draw circle as well as oval shape. Oval क्या होता है? Oval अंडा, अंडाकार. अंडा आपने देखा है, सब लोग अंडा खाते हैं. You all must be eating egg. तो एग जो होता है उसके शेप को हम ओवल कहते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे अगर हमें ओवल ड्रॉ करना है या फिर हमें सर्कल ड्रॉ करना है तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से ओवल टूल को चूज करते हैं. वी विल चूज ओवल टूल. दिस इज हियर वी हैव ओवल टूल. यू कैन सी इन द पिक्चर चिल्ड्रन. हियर यू हैव ओवल टूल. दिस इज ओवल टूल. ये ओवल टूल है. और सबसे पहले हम ओवल टूल को सेलेक्ट करेंगे और ओवल टूल को नहीं, सबसे पहले तो हम होम पे जाएंगे ना. होम पे जाएंगे, यहाँ पे होम पे जाएंगे. होम पे जाने के बाद वी विल सेलेक्ट ओवल टूल. आफ्टर सेलेक्टिंग ओवल टूल वी विल सेलेक्ट साइज. आफ्टर सेलेक्टिंग साइज वी विल select any of the line from here, and then children we will come back to the drawing area. We will bring our cursor to the line area. Here when we drag the mouse we will get a shape called circle or oval on the screen. अगर हम गोल बनाएंगे तो गोल बनेगा और थोड़ा पुल करेंगे तो वो ओवल हो जाएगा. तो here we will get a shape called circle or oval on the screen or the in the drawing area. ड्राइंग एरिया में माउस को ड्रैग करके हम ओवल भी ड्रॉ कर सकते हैं और सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं. सो हियर ऑल्सो स्टेप्स आर सेम. फर्स्ट थिंग इज टू सेलेक्ट द होम टैब. You will select home tab and then you will select the particular shape which you want to draw. वो shape को आप choose करोगे जिसे आपको draw करना है. तो यहाँ पे the steps are same for all selecting any of the tools. Here click on home tab. होम टैब जस्ट टूल, ये जो आपका टाइटल बार है रेड कलर का, उसके नीचे वाले बार को हम होम टैब कहते हैं. सेकेंड बार
ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड होम टैब। होम टैब के ठीक नीचे हमारे पास टूल्स होते हैं और उसके बगल में हमारे पास कलर्स होते हैं। टूल्स और कलर्स अगल बगल होते हैं और टूल्स में से होम टैब सेलेक्ट करने के बाद टूल्स में से जो भी टूल हमको ड्रॉ करना है उस टूल पे सेलेक्ट करेंगे और टूल को सेलेक्ट करने के बाद हमें उसके साइज़ को सेट करना है। तो हम यहाँ पे साइज़ वाले बॉक्स पे वी विल क्लिक, फिर उसके नीचे जो लाइंस दिए हैं थिकनेस है हम उस पर सेलेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट वी विल कम बैक टू द ड्राइंग एरिया। दिस इज कॉल्ड ड्राइंग एरिया। ये ड्राइंग एरिया है। ड्राइंग एरिया में अपने माउस को के पॉइंटर को लाएंगे एंड वी विल ड्रैग। When we drag, we will get a particular shape which we have selected here. जो भी शेप हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग we will draw the shape in the drawing area. So these are the 5 steps how we can select and use any of the tool. Now, अब we have drawn a circle. हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया। Now we want to fill it we want to fill it with a color. We want to fill color in this circle. So यहाँ पे what will you do? Once again you will go to, here is fill with color में you will go to home tab. फिर से आप home tab पे जाओगे, then you will choose fill color. Fill color क्या होता है? There is a mug kind of picture here. यहाँ पे mug होता है which is just beside the pencil, जो पेंसिल के बगल में होता है। यहाँ पे एक मग होता है जिसे हम कलर ड्रॉप करते हैं, जिसे हम कहते हैं मग काइंड ऑफ थिंग। फिल कलर टूल है ये, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। दिस इज द सेकेंड स्टेप। क्लिक ऑन फिल विथ कलर। क्लिक ऑन फिल विथ कलर। हियर वी विल क्लिक ऑन फिल विथ कलर एंड देन वी विल क्लिक ऑन कलर वन बॉक्स। हमारे पास 2 बॉक्सेस है। देयर आर 2 बॉक्सेस, वन इज कलर 1 एंड द सेकेंड वन इज कलर 2. So firstly we will click on color one box. Click on any color from color palette. Here is the color palette. We all know what is color palette. This is the color palette. ये पूरा color palette कहलाता है जिसमें बहुत सारे colors होते हैं. We will click here. After clicking here children, what will happen? The color will be selected and when you come back to the ड्राइंग एरिया और सर्कल में आके यू विल क्लिक। जब यहाँ पे हमने कलर सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद जब हम फिल कलर को लेकर के हम इसके अंदर क्लिक करेंगे तो वी विल गेट द कलर विच वी हैव सेलेक्टेड इन द मेन सर्कल के बीच में हमें वो कलर मिल जाएगा, क्योंकि फर्स्ट कलर इज फॉर द पिक्चर। फर्स्ट कलर का मतलब होता है सेलेक्टिंग फर्स्ट कलर इज फॉर पिक्चर। तो फर्स्ट कलर को जब हम क्लिक करके ऊपर सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे दूसरा वाला जो दूसरा पार्ट है इसको सेकंड कलर कहते हैं, दैट इज़ फॉर द बैकग्राउंड। अगर हमें बैकग्राउंड कलर करना है तो हम कलर 2 को सेलेक्ट करते हैं और अगर हमें पिक्चर को कलेक्ट करना है तो हम कलर 1 को चूज़ करते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन कलर एनी शेप विच वी हैव ड्रॉन ऑन द स्क्रीन। तो इस तरह से आप किसी भी शेप को बना करके आप कलर कर सकते हो। So children, this is all in this chapter. We have learned how to choose or select the different shapes, and we have also learned how to draw a shape and fill color in it. So children, once again let us revise what we have done in today's video. So here we have learned how to select a tool which is used to draw shape. So the procedure is same for choosing a shape which we want to draw on the screen is same. For choosing a tool also, firstly we have selected a line tool. Line tool is used for drawing slant line. Slant का मतलब क्या होता है? What do you mean by slant children? Slant का मतलब होता है तिरछा, तिरछा यानी टेढ़ा, और स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है सीधी लाइन। तो अगर लाइन हम कितने तरह के बनाते हैं, हम सीधी लाइन भी बनाते हैं, हम तिरछी लाइन भी बनाते हैं, और ये जो लाइन हम बनाते हैं इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं? इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें लाइन टूल को यूज़ करना है, यानी कि यहाँ हियर वी आर गोइंग टू सेलेक्ट लाइन टूल। फॉर सेलेक्टिंग अ पर्टिकुलर टूल चिल्ड्रन, फर्स्ट स्टेप विच वी follow is the steps which we follow, and while following these steps, the first step which we follow is click on home. We click on home tab. हम home tab पे click करते हैं। First step is click on home tab. Second tab is click on second point is click on line tool.
सेकंड में हम लाइन टूल पे क्लिक करते हैं एंड देन वी सेट द साइज फ्रॉम द साइज बॉक्स। हम विड्थ चूज करते हैं, हम लाइन की विड्थ चूज करते हैं एंड दिस विड्थ इज चोजन फ्रॉम द साइज बॉक्स। सो यू कैन सी हियर इज साइज बॉक्स, इसको हम साइज बॉक्स कहते हैं। दिस इज कॉल्ड साइज बॉक्स वेयर वी हैव लाइन्स ऑफ डिफरेंट विड्थ, जहाँ पे हमारे पास अलग अलग विड्थ की यानी चौड़ाई की लाइन्स होती हैं। जब हम इसके ड्रैग बॉक्स पे डाउन एरो बॉक्स पे हम डाउन एरो पे क्लिक करते हैं तो वी गेट नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ डिफरेंट विड्थ। फ्रॉम हियर वी सेलेक्ट वन ऑफ द लाइन and then after selecting the width of a line children we drag the mouse on the drawing area। हम माउस को ड्राइंग एरिया में लेके जाते हैं जहाँ हमें ड्राइंग करनी है और वहाँ से हम क्या करते हैं, जो भी शेप हमने सेलेक्ट किया होता है वो अपने माउस को ड्रैग करने से वो शेप ऑटोमेटिकली बन जाता है। हम सीधा अगर ड्रैग करेंगे माउस को तो सीधी लाइन बनेगी और टेढ़ा ड्रैग करेंगे तो टेढ़ी लाइन यानी स्लैंट लाइन बनेगी। सो दिस इज हाउ वी सेलेक्ट एंड ड्रॉ अ लाइन। देन चिल्ड्रन इसके बाद फिर सिमिलरली वी ड्रॉ rectangle tool and then we can select rectangle and draw rectangle tool. We can select oval and draw oval or circle. So these are the steps, all the steps are same. So do read the chapter and practice what we have learned today. Until or unless you practice, hand-on practice children, you won't be able to understand. So thank you and have a healthy and joyful